Alaikum. My name is Dr. Zubair Bashir Khan and I am here to teach you the subject of pharmacology. So let's start. Before starting the introduction of pharmacology, हम स्टार्ट में देख लेते हैं कि फार्मेसी क्या है. That what is pharmacy and from where this word comes from. फार्मेसी बेसिकली आपके पास एक आर्ट और साइंस है फ्रॉम वेयर यू प्रिपेयर द ड्रग्स, जिससे आप जो हैं ड्रग्स बनाते हैं, मींस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एज वेल एज फ्रॉम सिंथेटिक सोर्सेज. एम क्या होता है इसका? द बेसिक एम ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज आर to prevent, to diagnose and to treat the patient with the disease. So we will write the definition of pharmacy. Pharmacy is an art and science of preparing drugs from natural and synthetic sources used for diagnosis, to mitigate means कम करना, prevention and treatment of diseases. So basically pharmacy is a broad term that means that you cure the patient with the disease or to mitigate the disease from the natural and synthetic suitable materials. If we discuss the natural sources, तो natural sources हमारे पास कौन से आते हैं? Natural sources means to obtain the drug from the natural means that natural means from where you extract the drug. So let's see the natural means of drugs. Suppose we have an example of aspirin. Aspirin having a chemical formula of acetyl salicylic acid used to prevent the formation of blood clots as well as means simply it is a platelet inhibitor medicine as well as for the treatment of fever. Second natural source, if you talk about the medicine, it is a digitalis. Second natural source हमारे पास digitalis है. Digitalis क्या है? Digitalis आपके पास एक मेडिसिन है, एक ड्रग है जो कि आप क्या करते हैं, किस पर्पस के लिए देते हैं? For the increasing the contractility of the heart. So digitalis is obtained from which natural source? Digitalis को हम जिस natural source से obtain करते हैं उसका नाम है digitalis lanata, which is a flower. Means digitalis lanata, which is a flower. So this is the natural source of the drug from where we extract a drug or from where we obtain a drug, या जहां से हम जो drug obtain कर रहे हैं ये आपका वो source है. Means this is the ultimate natural source of obtaining a drug. As far as the synthetic source is concerned, synthetic source means
Synthetic source means obtaining a drug from the laboratory. सिंथेटिक सोर्स का मतलब ये है कि आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग आप किसी भी लेबोरेटरी से ऑब्टेन करते हैं. Means to prepare a drug in an artificial means or synthetic means, or in some cases it may be the semi-synthetic means. हम डिस्कस करते हैं about pharmacology. वर्ड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की वर्ड हिस्ट्री क्या है, एज वेल एज हम ये देखते हैं कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और कुछ बेसिक टर्म्स फार्माकोलॉजी से रिलेटेड दैट माइट हेल्पफुल टू यू. Starting from the word history, or you can say the etymology. Of pharmacology. The word pharmacology comes from the two Greek words, means the pharmakon and logi. Pharmakon and logi means कि जो आपके पास फार्माकोलॉजी एक टर्म है, ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बना है. ठीक है. दिस टर्म इज कॉइंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट combinations. Number one is pharmakon. Pharmakon means drug or medicine. And logi means to discuss or to study. So we can define pharmacology. तो हम pharmacology को define कर सकते हैं कि आपके पास the study of drug and their action on the body. So the study of drugs, medicine and their action on the body is called pharmacology. So we will define the pharmacology as the study of drugs and their action on the body is called pharmacology. Means हम pharmacology में different drugs, medicines की study करते हैं और उनका आपकी बॉडी में actions क्या है उसको हम देखते हैं. So simply pharmacology आपके पास एक broad term है that you can see that how the body absorbs the drug, how the body distributes, metabolizes and excretes the drug, and ultimately what the drug does to the body, which is ultimately the two branches of pharmacology. The two main branches of pharmacology are pharmacokinetics and pharmacodynamics. Before discussing the pharmacokinetics and pharmacodynamics, pharmacokinetics और pharmacodynamics जो दो मेन ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की, उनको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं हमने बात की कि ड्रग और मेडिसिन में फर्क क्या है, ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन. आपने मोस्टली सुना होगा कि कुछ केसेस में जो है लोग कहते हैं ड्रग, कुछ केसेस में कहते हैं मेडिसिन. तो ड्रग और मेडिसिन में फर्क क्या है, दैट हाउ वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू बेसिक टर्म्स रिलेटिंग टू द फार्माकोलॉजी और द मेडिकल साइंस. सो वी कैन से दैट ड्रग इज अ सब्सटेंस that is present in a crude form. means ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्रूड फॉर्म है, मीन्स जिसकी कोई प्रॉपर डोजेज फॉर्म नहीं होती. डोजेज फॉर्म मीन्स कोई वो टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप, सस्पेंशंस, एरोसोल्स मीन्स किसी भी डोजेज फॉर्म में नहीं होता. एज वेल एज उसकी कोई डोजेज स्पेसिफाई नहीं होती. मीन्स 500 milligram if you give the patient a drug Panadol 500 milligram, that Panadol 500 milligram when you specify the 500 milligram, this is the specified dosage
when you doesn't specify any dosage, means just you write, you can say that Panadol, so there is no dosage mentioned in this case. So we can say that Panadol simply is a drug, and if we specify the dosage in it, means Panadol 500 mg that is used for treatment of fever, that is antipyretic, analgesic, as well as it is used to treat the fever and pain. Means antipyretic and analgesic under the class of NSAIDs, means non-steroidal anti-inflammatory drugs. So let's see, let's rewrite the main difference between the drug and medicine. Drug is a substance which is in crude form, means which is not in a proper dosage form, not in proper डोजेज फॉर्म का अभी मैंने आपको बताया, डोजेज फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, मींस के उसकी कोई डोजेज फॉर्म नहीं होती, वो टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं होता, वो कैप्सूल की फॉर्म में नहीं होता, वो सिरप्स की फॉर्म में नहीं होता, वो सस्पेंशन की फॉर्म में भी नहीं होता, एज वेल एज एंड डोजेज, मीन्स उसकी कोई डोजेज नहीं स्पेसिफाई होती, मीन्स कोई भी मेडिसिन आपके पास, कोई भी आपके पास मेडिसिन की प्रॉपर डोजेज फॉर्म जैसे मेंशन होती है, इसमें आपके पास कोई भी आपके पास ड्रग है, मीन्स पैरासिटामोल है, आपके पास कोई भी एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन है, सेफ्ट्राक्सोन है, आपके पास कोई एनसाइड्स, नेप्रोक्सन सोडियम है, या कोई भी आपके पास किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपके पास कोई भी ड्रग है, उसकी जब डोजेज मेंशन नहीं होगी तो आप उसको कहेंगे दिस इज अ ड्रग. एंड ड्रग अल्टीमेटली यूज फॉर अ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज, used to diagnose, treat and prevent disease. इसी कंपैरिजन में अगर हम बात करें मेडिसिन की, मेडिसिन बेसिकली क्या होता है? मेडिसिन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड आल्सो फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, mitigation of the disease, but medicine is in a proper dosage and a dosage form. Medicine is a substance which is in proper dosage form, as well as in specified dosage. It is also used for diagnosis, treatment and prevention of disease. As far as medicine is concerned, medicine contains the drug as well as the active pharmaceutical ingredients. कोई भी ड्रग आपके पास होती है उसमें आपके पास just active pharmaceutical ingredient होता है, means that does not contain the any stabilizing agents, that does not contain any suspending agents, that does not contain any diluents, that does not contains the any colorants and the sweeteners. But in case of drug is concerned, drug contains different form of active pharmaceutical ingredients, means drug basically comprises of if we see it consists of basically the active pharmaceutical ingredients. अगर active pharmaceutical ingredients जैसे इसमें होता है तो it can cause the severe adverse reactions to the body, और body में severe adverse reaction भी cause करता है और साथ में ये toxicity भी cause करता है, और ये सबसे most important thing drug जो है वो addiction cause करता है आपकी body में, means जब आप एक बार medicine ले लेंगे, एक बार in the form of drug that does not contain any dosage, जब आप drug लेंगे तो आपको
इसकी एडिक्शन होगी, यू कैन बी हैबिचुअल ऑफ दैट वन ड्रग। ये आपके पास एडिक्शन भी काज करता है ड्रग, और एज वेल एज आपको सीरियस एडवर्स रिएक्शंस भी शो करता है। तो लेट्स सी। As far as medicine is concerned, मेडिसिन में मिनिमल एडवर्स इफेक्ट होते हैं, और यू कैन सी द टॉक्सिसिटी एंड नो habituality, means you can say the addiction, ड्रग एडिक्शन काज करता है, और मेडिसिन जो है वो नो एडिक्शन, मेडिसिन से आपको एडिक्शन नहीं होती। वन थिंग इज दैट इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ यू कैन, आपको क्लैरिटी हो जाए कि ड्रग और मेडिसिन में जो बेसिक डिफरेंस है विद वन एग्जांपल अगर हम देखें तो वो ये है। मींस अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे पैनाडॉल, जस्ट मैंने यहां पे पैनाडॉल लिखा है, और यहां पे मैं लिखता हूं पैनाडॉल 500 mg, पैनाडॉल 500 mg। तो लेट्स सी, अगर यहां पे, बल्कि आप लोग जो है पैनाडॉल की जगह यहां पे आप स्पेसिफाई करो पैरासिटामोल, जस्ट दिस इज द पैरासिटामोल। यहां पे मैंने कोई डोजेज स्पेसिफाई नहीं की, यहां पे मैंने साथ में कोई मेंशन नहीं किया कि आपके पास कितनी डोजेज है, 500 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है, 250 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम है, 50 है, 75 है। तो मैंने कोई स्ट्रेंथ इसमें मेंशन नहीं की। तो ये आपके पास क्या हुआ, दिस इज द ड्रग, मींस दिस इज द जस्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट डज नॉट कंटेन द एनी इनएक्टिव फॉर्म और एक्सिपिएंट्स। तो ये आपके पास जो आ जाता है पैनाडॉल 500 mg, मींस इसमें आपके पास आप लिखेंगे टैबलेट पैनाडॉल 500 mg, मींस कि ये आपके पास डोजेज फॉर्म भी आ गई, स्पेसिफाई होगी, टैबलेट है, पैनाडॉल है, मींस पैरासिटामोल भी है इसमें, और साथ स्ट्रेंथ बता दी कि आपने 500 मिलीग्राम लेनी है। अब जैसे पैरासिटामोल है इसमें स्पेसिफाइड नहीं है आप 500 लेना है, 1000 लेना है, 2000 लेना है, 3000, तो ये तो टॉक्सिसिटी भी काज कर सकता है। तो जब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने लेना जस्ट पैनाडॉल, टैबलेट पैनाडॉल 500 मिलीग्राम, मींस दिस इज द यू कैन से द ऑथेंटिक वे of telling that this is the medicine, means this is the easy or the easiest way to visualize and inspect that what is the drug and what is the medicine। मेडिसिन में आपके पास प्रॉपर डोजेज होती है, डोजेज फॉर्म होती है, जो कि आपके पास विजुअल इंस्पेक्शन पे आपको वो जो है वो आप इंडिकेट कर सकते हैं। एज फार एज ड्रग इज कंसर्न, ड्रग में कोई डोजेज फॉर्म, कोई डोजेज मेंशन नहीं होती, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया है। Now we see about the basic branches of pharmacology, means के आपके पास मेन हमने फार्माकोलॉजी देखी, फार्माकोलॉजी की जो मेन दो ब्रांचेस हैं जिसके अराउंड पूरी फार्माकोलॉजी जो है बेस करती है, उन दो ब्रांचेस के नाम क्या हैं जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किए हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ये दो मेन ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की, जिसकी बेस पे पूरी फार्माकोलॉजी रिलाई करती है, मींस आप इस पे फार्माकोलॉजी डिपेंडेंट है, विदाउट दैट फार्माकोलॉजी इज इनकम्प्लीट। तो वो हम देखते हैं, वो दो ब्रांचेस क्या हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं।